Welcome back, viewers. You're watching the Savera and I'm Shefali. Authorities in Bhopal has initiated bulldozer operations targeting the homes and properties of accused individual in a high-profile case involving alleged love jihad and sexual exploitation. The operation carried out amid heavy police deployment focused primarily on the residence of Sahil and Saad, also known as Shamsuddin alias Saad. The case revolves around accused individuals including Farhan, Sahil and Saad, who allegedly lured Hindu female students from a private engineering college into relationships under false pretenses. According to complainants, some accused misrepresented their religious identities, gained the trust of the victims through emotional manipulation, and subsequently coerced them into sexual relationships. The victim claimed that the accused then recorded obscene videos and used them for blackmail, forcing some to convert to Islam and participate in coerced marriage ceremonies. Officials said that while the bulldozer action is ongoing at several locations, the residence of Farhan is reportedly not being targeted at this stage. One notable site of demolition is Club 90, a restaurant allegedly used in the exploitation, where portions of the property, particularly areas claimed to be illegal constructed, have been torn down. Municipal authorities have reportedly cancelled the leases of the premises, signalling administrative action against the alleged illegal activities. SDM Ravish Srivastava stated that the complaints have been received regarding 3 individuals and the ongoing operations against 2 of them are nearing completion. The case, which has drawn intense public scrutiny and debate in Bhopal, underscores issues of sexual exploitation, abuse of vulnerable students, religious coercion, and criminal deception. A special investigation team formed earlier continues to gather evidence and pursue the absconding accused. The complaint submitted to the National Human Rights Commission detailed the exploitation, noting a systematic pattern in which the accused allegedly manipulated female students into relationship, threatened them with exposure of intimate videos, and coerced them into conversion and forced marriages. The NHRC has reportedly taken note of these claims, adding a legal dimension to the ongoing administrative and criminal proceedings. The Bhopal case has raised broader societal questions about safeguarding young women in educational institutions, preventing abuse of trust, and addressing criminal activity that exploits both personal and religious vulnerabilities. Authorities appear determined to convey a zero-tolerance stance through both legal and administrative measures. स्टे लिया है, स्टे हो गया, हमारा स्टे अदालत के अंदर है, उसकी पूरा वीडियो फुटेज है, लेकिन मजिस्ट्रेट सामने रख लिया, उसकी दूसरी कॉपी दी है कि आप ये ले आइए, जब तक कि इसकी पूरी सुनवाई नहीं हो सकती, ये तोड़ेंगे नहीं। 11 बजे आज 11 बजे सुनवाई है। अगर ये कोई किसी प्रकार की तोड़फोड़ करते तो उनको हटा देना पड़ेगा। 11 बजे के बाद अगर फैसला आता है जो कार्य दिवस होगा उस दिवस पर उन्हें उपस्थित होना पड़ेगा। ऊपर भी अदालत है, ये तो थोड़ी है कि ऊपर अदालत नहीं है, इंसाफ नहीं मिलेगा। जहाँ से इंसाफ नहीं मिलेगा ऊपर जाएंगे। बेटे ने किया है, आप बेटे ने किया है तो ये अदालत फैसला करेगी। मैं थोड़ी होता फैसला करने वाले, आप थोड़ी होते फैसला करने वाले। अदालत का तो फैसला आन दीजिए आप। अदालत का फैसला नहीं आएगा, आप अदालत का फैसला नहीं मानते। जो कार्रवाई के लिए आ गए, मेरी आयत है, मेरी तो लेटर लगा हुआ है माननीय मजिस्ट्रेट साहब का, चिपकाया मैंने, उन्होंने किया कि आप ले आके चिपका दीजिए। अगर इसमें कोई नुकसान होता तो आपको नुकसान बराबर दिया जाएगा। इमामत करते थे उनके पापा। तो क्या आप कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ शासन प्रशासन से, इस मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से, कि जो भी इस तरह की घटना आगे जाके हो, लेकिन मकान के बदले मकान दिया जाए, भरण पोषण दिया है। अब ये परिवार कहाँ गया, कहाँ गायब हो गया, कौन ले गया, कौन किडनी में कह दो। परिवार की क्या गलती है अगर लड़का ऐसा निकलता है? अगर लड़का निकलता है तो लड़के को शासन प्रशासन उसको दंडित करे, वो कानून की प्रक्रिया है साहब। लेकिन ये मकान माता पिता का था उनके, उनने माता पिता ने मेहनत मजदूरी करके बनाया था। लेकिन हम ये चाहते हैं, हम तो मेले जा रहे हैं, हम कोई इनके रिश्तेदार नहीं है। हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहते हैं, निवेदन करना चाहते हैं कि मकान के बदले मकान दिया जाए। नाम क्या तुम्हारा? मेरा नाम सर महबूब, समाज सेविक, सभी थानों का समाज सेविक। That's all for now in this update. Stay tuned to the Savera. Download the app and follow us on various social media platforms.